हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन प्रोडक्ट्स की विच इज़ फ्रॉम कीप कूल एंड मैं इनको 2 वीक से यूज़ कर रही हूँ एंड आई वांट टू टॉक अबाउट प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉर्मुलेशन टू पैकेजिंग एंड द इंग्रेडिएंट्स एंड एवरी सिंगल थिंग। सो येस, इफ दैट इंटरेस्ट यू प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड येस, ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द टोनर, यू कैन सी कि ये प्लास्टिक बॉटल में आता है और टेक्सचर इज़ सो वाटरी and this has 85% of bamboo water which makes it so hydrating and soothing for the skin. And honestly speaking, I've been loving this toner. This is so now coming to the serum, ये ऐसे एक पम्प बॉटल में आता है और ये भी बॉटल भी। now coming to the texture, you can see ये भी बहुत ज़्यादा watery है और कुछ भी like बहुत thick again like any other serum, and it's so hydrating. It also has 4.5% of Centella asiatica which makes it really good for the skin if you have irritated or sensitive. Alright, now coming to द कीप कूल लोशन, ये भी ये सेम बॉटल में आता है टोनर के जैसे एंड इट्स इट्स नॉट वेरी थिक, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है अच्छे से। सो अगेन इट्स वेरी गुड फॉर एनी काइंड ऑफ स्किन, बट अगेन इफ यू हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन दिस कैन बी टू मच फॉर स्किन, सो आई डोंट रिकमेंड इट टू एक्सट्रीमली ऑयली स्किन, अदरवाइज दिस इज अ really good lotion. Alright, now coming to the keep cool sooth serum, they have added 66% of bamboo water and they have also added 4.5% of Centella asiatica which is so good if you have sensitive skin and if you have like irritated skin. and इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि आपकी स्किन को सूथ करता है और कोई भी अगर बैक्टीरियल और फंगल अगर प्रॉब्लम होती है आपकी स्किन पे तो इट एक्चुअली सूथेज योर स्किन एंड विच इज़ so good. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले 2 वीक से जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आई हैव नॉट सीन एनी काइंड ऑफ ब्रेकआउट और एनी काइंड ऑफ लाइक इरिटेशन ऑन माई स्किन एंड आई वॉज ट्राइंग देम ऑन देयर ओन। मैं इनके साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही थी अपार्ट फ्रॉम माई सिरम्स दैट आई यूज़, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर वर्किंग सो गुड फॉर माई स्किन बिकॉज आई थिंक दे आर मेंट फॉर देयर सेंसिटिव स्किन टाइप एंड दैट इज़ द रीज़न बिकॉज दे हैव एडेड सच गुड ingredients into these product and this entire range. So I really like this serum. Alright, now they have also added hyaluronic acid into this serum and they have added the lower molecular size of the hyaluronic acid and उसका जो मेन फंक्शन ये होता है कि वो आपकी स्किन के डीपर लेयर्स पे जाके इफेक्टिव होता है और हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, सो दैट इवन इफ यू वॉश योर फेस शुड बी मॉइस्चराइज इनफ एंड आपकी स्किन का जो बैरियर है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, विच इज़ so good. Now coming to this serum, they have added so many hydrating ingredients like butylene glycol, glycerin, sodium hyaluronate, allantoin, which is so hydrating for the skin and it actually helps in protect your skin's barrier. One thing I want to mention is कि इसमें कोई भी कलर नहीं है, कोई भी artificial fragrance, paraben, sulfate या कोई भी harmful chemicals नहीं है, which is so good. And this is not only good for the sensitive skin type, but I think this is good for any. And also I'm going to share the complete like ingredient list in the description box, so please make sure you check that out because और इस टोनर में इन्होंने लो और हाई दोनों मॉलिक्यूलर साइज के hyaluronic acid को ऐड किया है which will actually help into the both of the layers like your upper layer of the skin and the lower layer of the skin. तो जो भी लोअर मॉलिक्यूलर साइज का जो भी hyaluronic acid इन्होंने ऐड किया है which will actually be very effective into the deeper layers of your skin और आपकी स्किन को deeper layers पे जाके बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है and the high molecular size will be effective on the upper layer of your skin और आपकी स्किन को actually very hydrate and it will make your skin plump. And now let me talk about my experience about this toner. I am loving it. As soon as I wash my face और मैं इसको जैसे ही अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन पे it feels so soothing. So it's very soothing to the skin और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है like अपनी स्किन पे लगाने के बाद. And they have also added the similar ingredients like butylene glycol, glycerin, sodium hyaluronate, and all of these are so hydrating for the skin. So as far as the ingredient list is concerned, they have not added a single ingredient which will irritate your skin or which is not good for your skin. तो सारे ingredients बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, but again I will share the list in the description, so please check. Right now they have also added a few extracts of the flower and leaves which will include Japonic extract, thuja extract, bamboo extract, and these are so soothing and so hydrating for the skin. And honestly speaking, the formulation is so good for all of these 3 like products which I have used so far. मैंने इनकी पूरी entire range नहीं try की अभी, but I will try it because I am really liking the formula. And alright, now let's talk about the lotion. I mean, I am in love with the texture and the formulation of this product.
and I'm so like my skin feels so thankful. 2% of dermacelera, which is like an extract from the Korean leaf, and this is like an anti-fungal and antibacterial ingredient. आपकी skin को soothe करता है, and जो भी अगर bacterial कुछ भी acne या फिर कुछ भी ऐसी problem है आपकी skin पे, तो which is very effective on that. And it also has 7 layers of hyaluronic acid, which is so good. I mean, I am loving it so much. It's so hydrating, और this product is enough on its own. मतलब आपको ज़रूरत नहीं है इसके बाद कुछ भी यूज़ करने की. Alright, now coming to this product's texture, बहुत ज़्यादा अगर आपकी dry skin है, this is so good for you. But I would say if you are an extremely oily skin, like extremely oily skin, this can be a little oily for your skin type. Alright, now coming to the ingredient list of the lotion, again they have added jojoba oil and the coconut oil. Now it's so good if you have fungal acne, or you know, like eczema or something on your skin. And honestly speaking, jojoba oil is really good for that. But for some people, coconut oil is very comedogenic. And see, if I talk about my experience so far with this product, especially, I did not see any kind of breakout, और मेरे pores में कोई भी clog नहीं हुआ, या फिर कुछ भी ऐसी problem नहीं आई है. मुझे अभी तक कुछ भी ऐसा feel नहीं हुआ अपनी skin पे. But see, it's again very sub. Now coconut oil can be very comedogenic if you use it on its own, but I think for this product, because they have added into a low concentration, it's working really fine for my skin type. And see, it's again very subjective, so I will not recommend this lotion to if you have acne prone skin, or sensitive skin type, or in fact if you have big pores. I do have big pores and my skin is very like sensitive towards these things, but so far for my skin this is working really great, and I think I'm going to buy it again because I'm loving this formula and everything. Right now, coming to my experience with these products, I'm loving this entire range. This is so good and so soothing and effective for the skin. And सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको mini trial size में भी try कर सकते हो if you don't want to buy the big bottle at once. So you can first go ahead and try these products, and then you can invest your money into the big. And yes, you guys, that's it for today's video. I hope आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आपको कोई भी डाउट है इन products related, you can just drop a comment in the comment box, and please let me know about some recommendations for skincare or makeup or anything else you guys would want me to try. I'd love to do that. And yes, I will see you next time with another video. Till then, please be happy, take care of yourself, and bye.